ओके रजा। सो फंड फ्लो स्टेटमेंट ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मेसर्स ए एंड बी। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? पार्टनरशिप on 1st April 2020 and 31st March 2021 means opening and closing date था, starting and closing, yes or no? अच्छा, क्वेश्चन एरर की है, ऊपर की लिखता अप्रैल एंड मार्च, अंदर की लिखता जनवरी एंड दिसंबर। कुछ करेक्ट करना पड़ेगा इसे। योर क्वेश्चन विल गो लाइक अप्रैल टू मार्च। ओके, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਡੇਟ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ठीक है? या तो ऊपर भी जनवरी दिसंबर कर लोगे और या नीचे भी मार्च, अप्रैल और मार्च का, ठीक है? दैट वे विल मूव। क्वेश्चन रीड करिए, ओपनिंग क्लोजिंग सोच के चलिए ना आप। कहते सानू क्रेडिटर्स गिवन है, मिसेज एज लोन, लोन फ्रॉम बैंक, हायर परचेज वेंडर 20,000, कैपिटल इज गिवन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। पार्टनरशिप पहला पॉइंट की सॉल्व करी था क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला, यस और नो? की फॉर्मूला होता बोलो? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस ड्रॉइंग। ठीक है, सो सानू ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल इतने मिल गई, ठीक है? नेक्स्ट थिंग, कैश गिवन है, डेटर्स गिवन, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड डिलीवरी वैन। द डिलीवरी वैन was purchased in March 2021 on hire purchase basis. A payment of 5,000 was made immediately and the balance of the amount is to be paid in 20 monthly installments of rupees 1,000 each, together with interest of 12% per annum. Interest at the rate 12% per annum. इंटरेस्ट आज पे करना है या कभी फ्यूचर? बोलो, फ्यूचर। इधर आज कुछ कोई भी वर्क नहीं है सर। ड्यूरिंग द ईयर partners withdrew 26,000 for domestic expenditure means drawings. The provision for depreciation against machinery opening कितने given है 27,000 and closing कितने given है 36,000. You are required to prepare a fund flow statement. सब तो पहली चीज कैपिटल का फॉर्मूला लगाइए। क्लोजिंग कैपिटल मिल गई 1,54,000, ओपनिंग कैपिटल मिल गई रजत 1,48,000, यस और नो? आफ्टर दैट नेक्स्ट बोलो, नेट प्रॉफिट गिवन है कितने? नो सर। ड्रॉइंग्स गिवन है 26,000, प्रॉफिट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ? बैलेंसिंग फिगर दैट इज रुपीज 32,000। नेट प्रॉफिट जाऊगा कितने? एफएफओ स्टार्टिंग पॉइंट एंड ड्राइंग्स कितने जाती? एफएफएस एप्लीकेशन। ओके रजा। नाउ नेक्स्ट थिंग, इस क्वेश्चन का होर इंपॉर्टेंट चीज केड़ी है? एक तो सानू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दे ओपनिंग क्लोजिंग बार गिवन एडजस्टमेंट मींस दोस्त अकाउंट दा ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। if it is given in adjustment, it is for machinery, so the machinery's value inside is gross or net? It is net. It is the at the net value. Agree? अगर वो net value ते है तो उसी account कितने बनाना? Gross ते. So we need to add back the opening value to opening value and closing value to the closing to make it gross. इन्हों भी देखिए, मशीनरी अकाउंट का ब्रॉट डाउन किया होगा 80,000 प्लस 27 एंड कैरी डाउन किया होगा 86 प्लस 36। बोलो यस और नो? ब्रॉट डाउन कैरी डाउन डन श्योर। और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन सिर्फ डेप्रीसिएशन का जो ओपनिंग क्लोजिंग सी 27 एंड
का डिस्कस। क्लियर? इस तो इलावा देखो फिर की है कि मशीन दी कोई परचेज या कुछ गिवन एडजस्टमेंट ਇਹਦੇ रिलेटेड होर कोई भी पॉइंट नहीं है और अंदर भी होर ਇਹਦੇ बारे कोई पॉइंट नहीं है। सो दिस इज द ईजीएस्ट केस ऑफ दिस मेथड जिथे ग्रॉस दिता ਹੁੰਦਾ और नाल उधर दोस्त अकाउंट ਹੁੰਦਾ। एच की आंदा बाय पी एंड एल हाइफन डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड एंड इधर टू कैश हाइफन परचेज। ठीक है, ये सारी चीज ਅਸੀਂ बेसिक पहले दो लेक्चर से कवर ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਰ। एग्री? तो कोई डाउट आंदा तो ਤੁਸੀਂ उस लेक्चर ਨੂੰ रिकॉल कर सकते स्टार्टिंग वाले पहले दो लेक्चर फॉर दीज बेसिक्स क्योंकि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ इस टॉपिक पे उस दो लेक्चर स्टार्टिंग दो लेक्चर से बहुत टाइम लगा ली। ਉਹਦਾ एग्जांपल ਜਿਹੜੇ मर्जी क्वेश्चन चेंज हो जाए वी कैन इजीली सॉल्व। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੋਂ डाटा जाएगा कितने राजा? परचेज कितने जाओगी? बोलो। परचेज विल गो टू एप्लीकेशन एफएफएस एंड डेप्रिसिएशन एड और लेस बस सिंपली। नेक्स्ट है फोर ਹੁਣ इस क्वेश्चन की खास वजह ओनली द पॉइंट ऑफ डिलीवरी वैन। ठीक है, एक तो आ पॉइंट इंपॉर्टेंट सी ग्रॉस मेकिंग वाला। ਹੁਣ डिलीवरी वैन का देखो द डिलीवरी वैन वाज परचेज्ड इन दिस ईयर किन्ने दी 25,000 25,000 ਦੀ डिलीवरी वैन परचेज की थी। 5,000 was paid immediately। पेमेंट करती कितना बचे 20 and that 20,000 is your loan liability means that is loan from higher vendor means higher vendor is your liability। you can see the value due is 20,000। agree? now that 20,000 is paid in 20 monthly installments of rupees 1,000 each। we did an example yes or no concept the time पे। so delivery van purchase की थी राजा 25,000 की कैश पेमेंट कितनी की थी 5,000 की एंड हायर वेंडर ड्यू कितना कितना 20,000। now that 20,000 is to be paid in 20 monthly installments of rupees 1,000 each। अगर तुसी 20 monthly installments की गल कर रहे हो 12 installments will fall within a year so those will become current liability। 12,000 will become current liability and remaining 8,000 will be paid after a year means the payment date is more than 1 year। these will become non-current liability। ठीक है, पहला आ चीज क्लियर। इस तो बाद सानू अपना फ्लो ऑफ फंड्स वाला कंसेप्ट कि फॉर फ्लो ऑफ फंड्स वन आइटम शुड बी करंट एंड द अदर शुड बी नॉन करंट। वो चीज चेक करो इधर केड़े चीज का कंसेप्ट है नॉन करंट। opposite side it should be current for calculating the flow of funds। on opposite side current item केड़ी है 5,000 and 12,000 means total 17,000। purchase of delivery van rupees 17,000। clear है जब? so flow of funds for purchase of delivery van will be considered rupees 17,000 and this will be posted on which side application in FFS। but you will not write 25,000, you will not write 20,000, you will only write 17। you will not write 5,000 even। yes or no? बच्चे दे माइंड ਜਾਂਦਾ वो चीज कैश फ्लो कैश हो रहा साडा 5,000। we are talking about fund। for the flow of funds you need to see one item should be current and the other should be non-current। so the flow of funds becomes rupees 17,000। clear है? now statement showing changes in working capital। बोलो करंट एसेट्स कैश डेटर्स स्टॉक बस ओपनिंग क्लोजिंग सीधा ही है कैश डेटर स्टॉक डन। करंट लायबिलिटीज देखो क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी मिसिस एज लोन इज नॉट लोन फ्रॉम बैंक भी नहीं हायर वेंडर ਇਹਦੇ ਚੋਂ
12,000 is your CL, current liability. This is again important. देखो दूसरी जगह भी इफेक्ट आ गया होगा. Yes or no? Higher vendors, 12,000 due is your current liability. So A minus B, working capital find कितनी decrease in capital, working capital आ गया. Second value will go to the third column. Okay, and everything will match as per rule. जो ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛे. ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ आती फर्स्ट स्टेटमेंट कोई. बोलो. ठीक है. Done. Now we'll make FFO, funds from operations. ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੱਸੋ. First point, net profit that we found out using this formula, rupees 32,000. After net profit, we made this account, so we'll add depreciation provided. How much? 9,000. After that, check करो कोई और चीज है. क्वेश्चन दी एडजस्टमेंट से नीचे एक डेप्रिसिएशन ਦਾ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰ ਲਿਆ. ड्रॉइंग्स का कोई रोल नहीं आऊगा, इस पेमेंट का कोई रोल नहीं आऊगा. ओके, अंदर देखो कोई रिटर्न ऑफ टाइप या कुछ और चीज, ट्रांसफर रिजर्व या कोई इंटेंजिबल या फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ, कुछ भी नहीं. नो नो गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स, कुछ भी नहीं. So you will get FFO, funds from operations, rupees 41,000. Agree? Now FFS, fund flow statement. सब तो पहली चीज FFO आ गया सोर्स वाली साइड, देन डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आल्सो सोर्स साइड. उस तो बाद नाल नाल देख लो, चाहे पहला प्रोविजन अकाउंट से कुछ नहीं आऊगा, मशीनरी अकाउंट से 15,000 दी परचेज ऑन द एप्लीकेशन साइड. ओके, नेक्स्ट उस तो ऊपर की कितना सी डिलीवरी वैन, ਇਹਦੇ ਚ ਫੰਡ ਫਲੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 17,000 on the application side. Purchase of delivery van 17,000. Okay, next one, net profit हो गया. drawings on the application side, how much? 26,000. drawings on the application side 26,000. now we'll go to the previous balance sheet. creditors नहीं आने. Mrs. A's loan, raising of Mrs. A's loan, which side? Source 20,000. loan from bank, repayment application 5,000. इधर हो गया सारा कैपिटल दी ड्राइंग्स या फ्रेश कैपिटल आनी होती है, इसे ड्राइंग्स पा लो. ठीक है. लैंड परचेज्ड एप्लीकेशन, बिल्डिंग परचेज्ड एप्लीकेशन, बाकी दो चीजें कर चुके हैं. यस सर. So raising of Mrs. A's loan, then repayment of bank loan, purchase of land, purchase of building, and your statement will match. Agree? केड़े केड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एक तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, क्लोजिंग कैपिटल वाला फॉर्मूला लगाना जरूरी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परफेक्शन चाहिए. सेकंड थिंग, दूसरा ग्रॉस फिक्स्ड एसेट को ग्रॉस करना कद करना जब दोस्त अकाउंट मींस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और accumulated depreciation, the opening as well as closing balance are given in adjustment. We'll add back and make the net values to gross value. ठीक है, then we'll make the account. ठीक है. और उस तो बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डिलीवरी वैन. ठीक है. कल वाले क्वेश्चन में ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਰਨਲ एंट्री गुडविल वाला क्वेश्चन, स्टॉक मशीनरी गुडविल टू शेयर कैपिटल, वो याद रखो. आज वाला क्वेश्चन डिलीवरी वैन, क्योंकि सेम रिपीट करने जरूरी है, पेपर आंदे बहुत बार, एंड सेम क्वेश्चंस आर देयर इन कैश फ्लो स्टेटमेंट आल्सो. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके राजा. तो यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर कि फंड फ्लो जेदा की कर रहे हो और बाद कैश फ्लो की कर रहे हो. एनी डाउट? क्लियर क्लियर. को एक सी रजा लोन्स, दो लोन से लोन्स फर्स्ट ऑफ ऑल अगर साइलेंट है, यू विल ऑलवेज कंसीडर इट टू बी नॉन करंट. ठीक है. सो इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल. सेकेंडली, मिसेस एज लोन एंड लोन फ्रॉम बैंक दोनों लायबिलिटीज है. मिसेस एज लोन, द ओपनिंग बैलेंस इज 0, क्लोजिंग बैलेंस इज 20,000. मींस ਤੁਸੀਂ इस साल लोन लिया
यू हैव रेज्ड अ लोन, लोन लिया, पैसे आए कि गए? आए, so you will put on the source. Second, loan from bank, your loan was 30,000 and now it is 25, means you have returned 5,000, so money goes out, that's why it is happening. And again एक डाउट आंदा कि ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੰਟ ਨॉन ਕਰੰਟ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਿਸ ਏਜ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਮਿਸਿਸ ਏਜ ਲੋਨ ਦਾ ਨॉन ਕਰੰਟ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੰਟ ਹੈ। सेम वे लोन फ्रॉम बैंक रिटर्न कर रहे हैं, वो नॉन करंट है, पैसे जा रहे हैं, वो करंट है। सिंपली फ्लो ऑफ मेन जिथे ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਰਨਲ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਕੇਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं है। हाँ, उसमें नहीं लेंगे, कभी साइलेंट है तो फिर टेक इट एज अ नॉन करंट लोन। जब ਅਸੀਂ बैलेंस शीट ਸਿੱਖਦੇ ਰਾਜਾ कंपनी ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, if loans are silent you will take it as non current, borrowings are silent, loans and advances are silent, you will take it as non current, investment is silent, you will take it as non current, but provision is silent, you will take it as short term current। provision normally is short term ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ within a year, yes or no? So now we'll go to next question। okay, exam को आना question number 10 राजा कि given are the following are the summarized balance sheets of Ashok Limited as on 31st December 2001 and 31st December 2002, मतलब opening closing बिल्कुल सीधा yes or no? ਹੁਣ क्वेश्चन ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ given है equity share capital opening is 4 lakh, closing is 4 lakh 80,000, share premium opening nil, closing 20,000, general reserve opening is 60,000, closing is 1 lakh, P&L opening 96,000, closing 1 lakh 36,000, debentures is given, creditors proposed dividend, proposed dividend, proposed dividend, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? proposed dividend normally ਹੁਣ बैलेंस शीट ਦੇ ਅੰਦਰ नहीं आता, ਹੁਣ नहीं आता। proposed dividend will now be shown to you in the adjustments only, और जब ये adjustments है ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, opening data pick करके provided as well as paid, closing ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं। ਆ ट्रीटमेंट सीखिया सी एडजस्टमेंट नंबर 2 ਦੇ ਸਮੇਂ, yes or no? now point is कि अगर ਸਾਡੇ एग्जाम इतना ही कोई पुराना क्वेश्चन पिक करके पा ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? सेम ट्रीटमेंट लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स, सिंपल इजी टू रिमेंबर कि सर अकाउंट बनूगा ਇਹਦਾ, ओपनिंग क्लोजिंग मिल गया, उस तो बाद अगर डिविडेंड प्रोवाइडेड गिवन है तो पेड बैलेंसिंग फिगर, पेड गिवन है तो प्रोवाइडेड बैलेंसिंग फिगर, दोनों नहीं गिवन था चक्री। ठीक है, कदों होना ये चीज जब बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा, और इस क्वेश्चन गिवन आंसर आगे देखो, freehold land and building, plant and machinery the cost then less depreciation, equipments at cost less depreciation, inventories debtors cash, current assets आ गए। छोटी छोटी 3 एडजस्टमेंट्स है, one relating to plant and machinery, the other equipment, and third one dividend। dividend declared in 2001 was paid during 2002। show statement showing the changes in working capital and statement showing the sources and application of working capital और funds। ठीक है, तो देखिए ध्यान, सब तो पहली चीज की बनाई रख, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स गिवन है क्लियरली, ओपनिंग डाटा, क्लोजिंग डाटा, करंट लायबिलिटी साइड देखो, क्रेडिटर्स गिवन है, दसो कि इतना काम हो गया, वेरी इजी, बाकी तो सॉल्विंग ही है, पैटर्न सेम। सेकंड चीज तो गिवन है प्रपोज डिविडेंड इन द बैलेंस शीट, so opening closing given है, proposed dividend is given on the liability side, it will open like buy balance brought down and close like to balance carried down, और ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ adjustments, dividend declared in 2001 was paid in 2002, means opening ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पे करता, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ actually paid ਦੱਸਿਆ है,
10 चक्री फॉर्म सी है बट पेड 10 है, सो दिस बिकम्स अर बैलेंसिंग फिगर आल्सो इजी। अगर वो लाइन ना भी दिंदा ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸਿੰਪਲੀ पुराना पे कर दो, न्यू प्रोवाइड कर दो। यस और नो? आगे चलिए। इस क्वेश्चन का इस तरह है, द पेड इज गिवन एंड प्रोवाइडेड इज द बैलेंसिंग। नेक्स्ट थिंग, काउंट्स चलिए। प्लांट एंड मशीनरी, opening cost is given, closing cost is also given. These are gross values before the reduction of depreciation. Then दोस्त account, opening value 280, closing value 3 lakh, दोनों चीजें आ गई। दो अकाउंट्स बन हो गए, पहला प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड ओदा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यस और नो? की मिल गया, ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग, सिंपल। उन एडजस्टमेंट रीड करिए। प्लांट एंड मशीनरी which cost rupees 40,000 and in respect of which rupees 26,000 had been written off as depreciation was sold during the year for 6,000. 40,000 cost, 26,000 depreciation, accumulated depreciation. WDV कितनी बची? 14,000 and the asset of 14,000 book value is sold for 6,000 means loss of 8,000. तो की करना, सब तो पहली चीज बाय कैश हाइफन सेल 6,000, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्विकली पाओगे with the दोस्त, depreciation is cancelled at the time of sale of asset by passing a cross entry with the दोस्त account, that is provision for depreciation. Cross entry means quickly, okay, and 8,000 is the loss by P&L hyphen loss। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, और कुछ गिवन सी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? नो सर। सो ਇਹਦੇ अंदर डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड बैलेंसिंग फिगर, ऊपर आ गया परचेजेस बैलेंस। इजी। सेम वे विल मेक इक्विपमेंट अकाउंट एंड ਉਹਦਾ दोस्त प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो इक्विपमेंट्स का बोलो बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 18,000, क्लोजिंग 20,000, दोस्त का ओपनिंग 12 and closing 8, brought down, carried down, brought down, carried down. Then next, the equipment which cost rupees 10,000 and in respect of which rupees 8,000 had been written off as depreciation was sold for 4,000. So cost 10,000, AD 8,000, WDV कितनी बची? 2,000। 2,000 वाली चीज sold for 4,000 means there is a profit of rupees 2,000। तो की करना, सब तो पहला सेल 4,000, AD depreciation means 8,000 quickly and 2,000 the profit to P&L hyphen profit. Then the balancing figures depreciation provided and purchase. Clear? उसके बाद की बनाना FFO। FFO लेकी करी था सब तो पहला, इंक्रीज या डिक्रीज इन P&L, बोलो 40,000। देन अकाउंट्स बनाए हो तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऐड हो जाओगे, लॉस ऑन सेल ऐड हो जाओगा, प्रॉफिट ऑन सेल लास्ट विच माइनस करोगे। इतना पॉइंट समझ आ गया? डिविडेंड सी था ਉਹਦਾ प्रोवाइडेड ऐड करोगे। पहला इन ये चीज़ें देखो, इंक्रीज इन P&L 40,000, डिविडेंड प्रोवाइडेड ऐड हो जाऊगा, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड दोनों दे ऐड कर लोगे, लॉस ऑन सेल ऐड कर दोगे, प्रॉफिट ऑन सेल माइनस कर, इन्नी चीज़ां हो गई। इस तो इलावा ਤੁਸੀਂ देख सकते अपने क्वेश्चन ਦੇ एडजस्टमेंट साडियां डन। क्वेश्चन के अंदर चेक करो कुछ रह गया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 40,000 ऐड करोगे, ठीक है, और कुछ रिटर्न ऑफ एंड ऑल कुछ भी नहीं। यस प्रोवाइडेड वाले
हाँ भाई, ये किकली वाली डेप्रिसिएशन में कितने भी सॉल्विंग च नहीं जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देन एफएफएस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, की करना बोलो। सब तो पहला एफएफओ, देन वर्किंग कैपिटल दा डिक्रीज, देन ਅਸੀਂ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया ਸੀ, सेल ऑफ प्लांट ਸੀਗੀ, परचेज ऑफ प्लांट ਸੀ। ਅਸੀਂ इक्विपमेंट अकाउंट बनाया, सेल ऑफ इक्विपमेंट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट। इन्नी चीज़ां डन। उस तो बाद बाकी देखिए, प्रपोज डिविडेंड च डिविडेंड पेड सी, एप्लीकेशन। ठीक है, बस हुन क्वेश्चन को आ जाओ वापस, ऊपरों पढ़ना स्टार्ट कर। शेयर कैपिटल की हुई इशू and share premium of 20,000 is also increased. Means the shares of face value 80,000 were issued with a premium of 20,000. Means issue the कितने पैसे आए? Total 1 lakh. 80,000 shares the face value increase हुई और 20,000 premium आया. So means you will write issue of share capital brackets add करके you can say 1 lakh. It's better to write together. हाँ कोई statement नहीं है, ठीक है? You can add that in bracket. Issue of share capital brackets 80,000 plus 20,000. ठीक है ना, जब 1 लाख आ जाओगे। नेक्स्ट वन, जनरल रिजर्व डन, पी एंड एल डन, डिबेंचर्स 1 लाख तो जीरो हो गए, मतलब रिडीम्ड, रिडेम्पशन कितने होगी, एप्लीकेशन साइड 1 लाख। क्रेडिटर्स डन, प्रपोज डिविडेंड जो डिविडेंड पेड वालों में 581। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग परचेज फॉर 70,000, परचेज फॉर 70,000 एप्लीकेशन। तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, परचेज ऑफ फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। क्लियर? और देखो कुछ बचे हैं इस तो बाद। Plant and machinery we have done, equipments we have done, inventories, debtors, cash done. Adjustments, plant and machinery, equipment, dividend paid. Okay, चेक करो मैच हो गया, सारे टिक लग चुके। ये सुनो, ये सुनो, क्लियर? श्योर। बाकी नेक्स्ट क्लास करते हैं।